Good morning, students. Class 8th Science, and today's activity under adult supervisions. Take some water in paper cup and heat over the candle. The paper cup will cannot catch fire, but the water will heat up. This is because water keeps the temperature of the paper cup lower than its ignition point. Life skill. Water is used to put the ordinary fire. Water reduces the temperature for burning object below its ignition points and fire gets extinguished. Energy combustible substance has its ignition temperature. A rock burns, but it has a very high ignition temperature. When a piece of rock from space enters to the earth atmosphere, it heats to its ignition temperature due to the friction. Have you seen the shooting star? In most cases, it is the burning pieces of rock falling toward the earth. क्या आपने बर्निंग स्टार देखा है? जब उसमें फ्रिक्शन के कारण जब वो फॉलिंग करता है बर्निंग पीस अर्थ पे, तो वो बर्न होता रहता है, जलते हुए आता है. इट इज मोस्ट बर्निंग ऑफ कम्प्लीटली बिफोर रीचिंग द अर्थ. लेकिन जब पृथ्वी पर वह पहुंचता है तो वो ज़्यादातर बर्न हो चुका रहता है. सम सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर. कुछ सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाइट फास्फोरस इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. ड्यूरिंग समर द सम प्लेसेस ऑफ द रूम टेम्परेचर राइजेस टू द अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड. कुछ इन समर में कुछ सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर से ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है. इन सच प्लेसेस वाइट फास्फोरस वुड बर्न ऑन इट्स ओन. और वाइट फास्फोरस अपने आप जल सकता है. ए मैच स्टिक हीट एज ए रेड फास्फोरस along with the other chemicals. This mixture has a low ignition point. That is why you are able to light matchstick just by striking it on the rough surface of the sides of the matchbox. The friction between the matchstick head to the rough surface generates the small amount of heat which is sufficient ignition of matchstick. मैचस्टिक जलाने के लिए उस पर जो रफ सरफेस होता है, जब उस पर रब करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सफिशिएंट हीट मिल जाता है जो कि उसका इग्निशन पॉइंट होता है और उससे मैच स्टिक बन कर जाती है. सब्सटेंसेस दैट इज़ वेरी लो इग्निशन पॉइंट इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन पॉइंट बहुत ही लो होता है तो उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे पेट्रोल, एलपीजी, स्प्रिट एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. व्हाट डज द कंबशन प्रोड्यूस गिवन ए एक्टिविटी? A chemical reaction given below represents combustion of three different substances. Study of the reaction and answer the questions. Charcoal C plus O2 combustion gives out CO2 plus heat. 2H2 plus O2 combustion gives out 2H2O plus heat. CH4 methane plus O2 gives out CO2 plus 2H2 plus heat. And given some question here, you have watch and give the answer. Combustion is a chemical reaction in which the oxygen react with combustible substance and produce heat. All combustible substance produce heat when they burn. Depending on the type of substance that burn, combustion also produces carbon dioxide or water vapor or both. Combustion often produce light. Why does the combustion of fuel produce heat? A fuel such as petrol is mainly made up of a carbon and hydrogen atom. These atoms are firmly bound with each other through chemical bonds. These bonds store energy. When the fuel is burned, the bond between carbon and hydrogen are broken down. जब फ्यूल बर्न होता है तो जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन का वो ब्रोकन हो जाता है. दिस रिलीजेज एनर्जी in the form of heat. This is why combustion of fuel gives off heat. The amount of heat given of complete combustion 1 kg of fuel is called its calorific value.
The SI unit measuring heat is joule. Heat is also measured in calorie. 1 calorie is equal to 4.184 joules. The calorific value of fuel expressed in the kilojoule per kg. Here given fuels, types of fuels and calorific value. Charcoal 33,000 kilojoule per kg. Coal 25,330, wood 17,000, dung cake 6 to 8,000, kerosene 48,000, petrol 50,000, diesel 45,000, ethanol 30,000, biogas 35 to 40, butane LPG 50, methane 55, hydrogen gas 1,50,000 kilojoule per kg. Calorific value of some fuels. Did you know a rocket used to huge amount of hydrogen fuel while the taking off from the earth? During combustion, hydrogen react with oxygen and produce heat energy. This energy helps to rocket to travel upwards to the earth's atmosphere. It also produces huge amount of water vapor. It appears to white cloud around the rocket as it's take off. 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस हीट. तो रॉकेट के लिए हाइड्रोजन फ्यूल लिया जाता है, वही उसको वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वो आसानी से रॉकेट को पृथ्वी से दूर पहुंचा देता है. थैंक यू स्टूडेंट.